Today is a very auspicious day, and that auspicious day is the Hichida festival. But within this festival, this is a process how a Grihastha, Raghunath Das, gets the special mercy of the Vaishnavas. Without the mercy of a Vaishnava, one cannot progress on the path of spiritual life. That's how we see Raghunath Das. Though he's a very, very rich family, but still he wants to take the shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And not directly, but he is trying to go through the process of Vaishnava Parampara. So that is the real business of a Grihastha devotee. How can he take the shelter of the Vaishnavas and become instrumental in taking complete shelter at the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu and ultimately going back home, back to Godhead? Raghunath Das was a very, very rich man from a rich family. But yet, he had a great desire to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, from this episode, we understand that what a best way to progress on the path of a spiritual life, especially the Grihasthas. So that is about it. And of course, today the Shlok Sankhya is 28. From the Srimad Bhagavatam, we'll continue that. And I'm sure, how many people observed Nirjala Ekadashi? Wow, very good. All the blessings. Very good. So you had breakfast? Everybody? Good. Then there's going to be a prasadam after the class at 11 o'clock. So we have a plenty of time from 8 to 11. Okay? So we'll all talk about wonderful topics. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari
Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Aya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ibo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan. Jai Gauranita, 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 Jai Gauranita. Jai Gaura Hare, Jai Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, 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 Gaura Hare. Nitai Gauranga, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Gurudev. Jai Vishwada Paramahansa Pravacharya Sutra Sat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Liberty Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Radha Kunjangul गिरी गोवर्धन की जाए, वृंदावन धाम की जाए, मथुरा धाम की जाए, द्वारका धाम की जाए, रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जाए, जगन्नाथपुरी धाम की जाए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जाए, मायापुर नवदीप धाम की जाए, गंगामय जमुनामय की जाए, वृंददेव तुलसी महारानी की जाए, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जाए, श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जाए, श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल प्रसाद वितरण प्रोग्राम की जाए, हरिनाम संकीर्तन की जाए, गौर प्रेमानंदे. All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories, all glories, all glories, Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, canto number
7, chapter number 3, and the Shlok Sankhya is 28. Nama Adhyaya Bijaya Jnana Vijnana Murtaye Pranendriya Manobuddhi Vikarer Vyaktim Ihuse Nama Adhyaya Bijaya Jnana Vijnana Murtaye Pranendra Mano Buddhi Vikarer Vyaktim Ihuse Vikarer Vyaktim Ihuse Namadhyaya Bijaya Jnana Vijnana Murte Pranendra Mano Buddhi Vikarer Vyaktimyo Se Namadhyaya Bijaya Jnana Vijnana Murte Pranendra Mano Buddhi Vikarer Vyaktimyo Se.
Mothers, word-to-word translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki. Nama. I offer my respectful obeisances. मैं जानता हूं आप लोगों ने थोड़ा निर्जल एकादशी किया है, मगर फिर भी जरा थोड़ा सा जोर से बोलिए। सुबह आप लोगों ने जूस वगैरह तो पिया ना, और पोहा भी खा लिया, अब थोड़ा शक्ति पैदा कीजिए, नो प्रॉब्लम। It looks, we should hear these shlokas very nicely, the word-to-word meaning, we should loudly hear. Okay. Adhyaya, unto the original living creature. Bijaya, the seed of cosmic manifestation. Jnana, of knowledge. Vijnana, and of practical application. Murtaye, unto the deity or form. Prana, of the life air. Indriya, of the senses. Mana, of the mind. Buddhi, of the intelligence. Vikarai, by transformation. Vyaktim, manifestation. You see, who has obtained. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. I offer my obeisances to the original personality within this universe, Lord Brahma, who is cognizant and who can apply his mind and realize intelligence in creating this cosmic manifestation. It is because of his activities that everything within the universe is visible. He is therefore the cause of all manifestation. Kindly repeat after me. I offer my obeisances to the original personality within this universe, Lord Brahma, who is cognizant and who can apply his mind and realize intelligence in creating this cosmic manifestation. It is because of his activities that everything within the universe is visible. He is therefore the cause of all manifestation. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The Vedanta Sutra begins by declaring that absolute person is original source of all creation, that is Janmadi Asya Yatha. One may ask whether Lord Brahma is the supreme absolute person. No, the supreme absolute person is Krishna. Brahma receives his mind, intelligence, materials, and everything else from Krishna. And then he becomes the secondary creator, the engineer of the universe. In this regard, we may note that the creation does not take place accidentally. Because of the explosion of chunk, such nonsensical theories are not accepted by Vedic students. The first created living being is Brahma.
who is endowed with perfect knowledge and intelligence by the Lord. As stated in Srimad Bhagavatam, Tena Brahma Hridaya Adi Kavaye. Although Brahma is the first created being, he is not independent, for he receives help from the Supreme Personality of Godhead. Through his heart, there is no one but Brahma at the time of creation, and therefore he receives his intelligence directly from the Lord through the heart. This has been discussed in the beginning of Srimad Bhagavatam. Verse number 1, which will remind ourselves. Lord Brahma is described in this verse as the original cause of cosmic manifestation, and this applies to his position in the material world. There are many such controllers, all of whom are created by Supreme Lord Vishnu. This is illustrated by an incident described in Chaitanya Charitamrita. When the Brahma of this particular universe was invited by Krishna to Dwarka, he thought that he was the only Brahma. Therefore, when Krishna inquired from his servant which Brahma was at the door to visit, Lord Brahma was surprised. He replied that, of course. Later, Lord Brahma asked Krishna why he had inquired with Brahma which Brahma had come. He was then informed that there are millions of other Brahmas because there are millions of universes. Krishna then called all the Brahmas, who immediately came to visit him. The Chaturmukha Brahma, the four-headed Brahma of this universe, though himself a very insignificant creature, in the presence of so many Brahmas with so many heads, thus although there is a Brahma who is the engineer of each universe, Krishna is the original source of all of them. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmlitam Yenai Tasmai Shri Guruve Namah. Namah Vishnupadaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauraduse Namah. Namo Brahmane Devaya Go Brahmahitaya Cha Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpadrubhyasya kripa sindhubheva Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. I'd like to thank everybody and welcome all of you for this Sunday's lecture. Thank you.
As you know that we are going through the chapter number 3 of the canto number 7, and the verse number is 28. Those who have been able to catch us lately, would like to give them, apprising them the earlier 2-3 verses, where we see that how Hiranyakashipu was very much, determined to do tapasya. And the tapasya is not an ordinary tapasya. This is an exclusive done by Hiranyakashipu. And we could see from the narration that his skull was, burning, ashes and so many other things used to come from the skull, and the fire was so much, even all the demigods in all the planets were terrified, and with the result, all of them went to Brahmaji to please save us, save us. And Hiranyakashipu here was trying to please the Brahma itself by his tapasya, because he thought Brahma is the actual original person. But to his surprise, we see that he, after great tapasya, Brahmaji came there, and he was very much happy to see Brahmaji standing in the air in front of him. And he offered his obeisances. So Prabhupada ji in the previous shloka is saying, seeing Brahma present before him in the sky, carried by his swan aeroplane, Hiranyakashipu was extremely pleased. He immediately fell flat with his head on the ground and began to express his oblation to the Lord. So it's a natural thing. Anytime when you see a senior person or a senior devotee, a sannyasi, we must inculcate these principles, that we must bow down to a sannyasi or a senior devotee very, very humbly, so that you retrieve knowledge from whoever he may be. This is the parikriya, and this should be the parikriya for aspiring Vaishnava who is trying to progress on the path of spiritual life. We can see a demon like Hiranyakashipu is also offering obeisances. What to speak of an aspiring Vaishnava who want to progress on the path of spiritual life? If we forget these etiquettes, the progress is very slow. There may be some progress, but progress will be very slow. So this has been happening since time memorial. We are not going to innovate on this at any time. But people who are completely arrogant and ignorant, these two people can defy these spiritual laws or Vaishnava etiquettes. Ignorant and arrogant. And an ignorant person comes, he doesn't know even how to come to the temple, he doesn't know how to bow down, he doesn't know anything. But a knowledgeable person or aspiring for a transcendental knowledge, he retrieves this knowledge from the seniors, and that's how the legacy continues. At any given time, if we fall short of these etiquettes, our life will be miserable. Our life will be without knowledge, and we will be becoming more and more arrogant. So here we see that even Hiranyakashipu, like a demon person, he is also offering his obeisances to Brahmaji. And Prabhupada is saying, whenever a man may sacrifice to the other gods, O son of Kunti, is really meant for me alone. Ye api anya devata bhakta yajanti shraddhaya yanvita te api mam eva kunteya yajanti avidha purvakam. They are doing this avidya purvak. They are not doing with shraddha. They are not doing with knowledge.
If any person is offering his offerings or anything to the devatas, but unfortunately, sometimes most of the Hindus, they are all into this trap, because they're all wanting to, materially progress, but not spiritually progress. They have a blockage on the path of spiritual life because they are trying to offer oblations to demigods. And they cannot give real results, because here it is said, even the demigods, whatever you are offering to demigods is taken by Krishna only, the Supreme Personality of Godhead. But they are doing it avidya purvak. Here it is in the Bhagavad Gita, chapter number 9, verse number 23 and 24. It is said avidya purvak. Okay? And we must, persons engaged in the worship of demigods are not very intelligent. I'm not saying it. Krishna is saying this. Those who are worshipping the demigods, they are less intelligent. And although such worship is indirectly offered to me, for example, when a man pours water on the leaves, all the twigs get also nourished. Isn't it? But he does it without sufficient knowledge or without observing regulative principle. The process of watering a tree is to pour water at the root. You don't pour water on the leaves. When you pour the water on the root, every branch is, gets the water. Every leaf is very even healthy. The same thing, when we are offering our obeisances, we are offering obeisances on every offering to the Supreme Personality of Godhead, everybody gets satisfied. Sarva dharmam paritajamam ekam sharanam raja aham toya sarva papi vimoksa sami mahasacha. Abandon all variety of religion, just surrender to me, I will take care of you. This is the conclusion of Bhagavad Gita, where Krishna is saying that you give up all these materialistic attitude and surrender to me. But unfortunately, we are so less intelligent and less knowledgeable. That's why we are tossed in different demigod worships all over India. So, but Bhagavad Gita is clearly eradicating our doubts by saying this. There are many types of yajna performance recommended in the Vedic literature, but actually all of them are meant for satisfying the Supreme Personality of Godhead. In the 3rd chapter of Bhagavad Gita, it is clearly stated that one should work only for the satisfying yajna or a Vishnu, nothing else. The perfectional form of human civilization, known as Varnashram Dharma, is specially meant for satisfying Vishnu. Therefore, Krishna says, I am the enjoyer of all the sacrifices. Bhoktaram yagitapasam sarvaloka maheshwara. This knowledge, when it is completely in our consciousness, then at the time we are not going to the demigods, or even when we come to Krishna, we are not asking for material boons. He is provider of everything, but yet a true devotee is not aspiring for a material boon. He wants to take the shelter of the Supreme Personality of Godhead unconditionally and unmotivated. So this is the beauty of Krishna consciousness. When you dissipate your darkness, ignorance, you can connect yourself at the lotus feet of Krishna and go thus back home, back to Godhead. Then you don't have to come to this material world and suffer in the material world again and again. That's the great acharyas, great devotees who in the past have surrendered to Krishna. They are requesting us to surrender to Krishna so that you don't come back to this material world and loiter in this material world without any aim. So it is said, Hiranyakashipu offered Brahma obeisances thinking that he is the Supreme Father. This is symptom of an asura.
Now, we don't want to call demigod worshippers asuras, but here Prabhupada is clearly saying that this is an asuric pravrti. Okay? Because ye dil mange more. And dil mange more, you going to many, many demigods. Huh? Ye dil mange more and you going to demigods. Dhanam dihi. Huh? Dhanam dihi. Vidya dihi. Paisa dihi. And under these desires, we keep on tossing. Somebody says, "Arey, udhar chala us sadhu ke paas." जाते हैं हम लोग साईं बाबा के पास, वहां पर सब मिल जाता है। नहीं 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 नहीं, हम लोग को जाना चाहिए, ये तुम्हारे कुंडली में क्या है, तुम्हारा शनि खराब है। पता चला हम लोग जाते हैं शनि सिंगापुर। नहीं नहीं, माता जी बहुत अच्छी है, जाते हैं हम लोग कहाँ, वैष्णव देवी। नहीं नहीं नहीं, हम लोग को जाना चाहिए वो काली माता जी के उपास है, जाते हैं काली माता जी के पास। So all these things are motivated for material gains, and the crux of the material gain is what? That everything is perishable and we don't take anything along with us. Whether you create bungalows, whether you create empires, whether you create big business empires, you don't take anything along with you. At the time of the death, nothing goes with you. And if you know the crux of this, that you are not going to gain anything at the end of your life, why you are endeavoring? Because there's a lust and greed which you want to satisfy all the time. In order to satisfy the lust and the greed and your desires, you keep on working like an ass. You keep on working like an ass, not knowing the purpose of your human life, not knowing that the grass is available and you are working like a donkey. So this happens because of the ignorance. This happens because we think that we have to work in order to maintain this body. But actually the maintainer is Krishna. And we come into this illusionary cavern that I have to do this, I have to do this, I have to do this, when everything is provided by Krishna. Advaitam achyutam anadi ananta rupam adyam purana purusham navayovanam. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is the original spectrum. He is the original Purusha. He provides everything. He provides everything, all the ingredients to Brahma also, to whom we call the original person. And that person is also meditating upon the Supreme Personality of Godhead for 1,000 years. And then he is able to retrieve the knowledge directly from Krishna, the Supreme Personality of God. And that is Srimad Bhagavatam first Sloka. That he gets knowledge from Krishna himself. So here it is said very clearly, those who are materially motivated, they are asuric pravrti. I don't want to call you all asura because you're all with Vaishnav Tilak. Isn't it? You have a Kantimala and you are on a progressive path of spiritual life. You don't have any attachment, isn't it? Tell me. Who says yes? But what attachment do you have, sir? It may be very difficult to tell you what type of attachments you have. But whatever attachments you may have in the progress of spiritual life, in due course of a time, if you are chanting the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare, all your material desires will be converted into the spiritual desires. And then you will aspire only for how to progress on the path of spiritual life. Lage raho.
Keep on chanting, and every syllable of the holy name you chant, and you will see that it will transform your materialistic heart. Never mind. Never mind that you have a materialistic heart, but you endeavor for spiritual goal, that the ultimate goal of your life. So here it is said the difference between a devotee and a non-devotee, or asura or a devotee knows that Vishnu is the Supreme Personality of Godhead, but asura doesn't know this. And in the material world, there are unlimited asuras. Not with the horns, not black in color. They're all suited, booted, nice knots, tie knots. They look very beautiful. But under this, nobody knows how much asura he is. How much asura he is, how much lusty he is, how much greedy he is, how much envious he is. By wearing a fantastic raiment suit, you are not going to cover all your materialistic desires and look very beautiful. You may look beautiful, but all these asuras, the Western civilization, they have very demonic propensities. What are those? They drink, eat meat, eat cow meat. They eat bull meat. And that's how they degrade themselves further in 84 lakhs of species and get lost in this whole creation. So we see then that Hiranyakashipu gets up, he's offering obeisances, and he's also weeping. असुर के सामने ब्रह्मा जी का दर्शन हो गए, उनकी आंखों में जल है, वो ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ब्रह्मा जी उनके सामने आ गए, और वो बड़ी नम्रता से उनके सामने प्रार्थना करने लगे. And faltering voice, just like a big employee, when he meets the boss, he cannot even speak. In a material sense, I can tell you. Isn't it? CEO से मिलने जा रहे हैं तो उस वक्त आवाज नहीं निकल रही, CEO ने बुलाया. Isn't it? The same way we see here that Hiranyakashipu is faltering in his voice. And then what is happening? He's offering obeisances. And then that's how is the, let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord within this universe. At the end of each day of his life, the universe is fully covered with dense darkness by the influence of time, and then again during his neck, because he is not the Supreme Personality of Godhead. You can see that how Brahmaji gets also annihilated. That's what is description here in the Sloka. Okay? So, then we hear this Sloka that's on the board here. It is said, I offer my obeisance to the original personality within the universe, Lord Brahma, who is cognizant and who can apply his mind and realize intelligence in creating the cosmic manifestation. It is because of his activities that everything within the universe is visible. He is therefore the cause of all manifestation. But Prabhupada ji gives the wonderful purport here. You listen this. What is it? Vedanta Sutra begins by declaring that the absolute person is the original source of all creation, Janmadi Asiyatha. So this is a shloka of, first shloka of our Bhagavatam. So what is Vyasadeva? Vyasadeva is completely clarifying all the doubts here in the first shloka. So I would like to, and the purport, Prabhupada is very clearly mentioning everything. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
जन्माद्यस्य यथो अन्वयात् इतरस्तश्चरतेव अभिजात सुरा तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत्सूर्या तेजो वरीवृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमरसा दामना स्वेन सदा निरस्त कुकलम सत्यम परम धीमहि. So, oh my Lord, who is saying this? Vyasadeva is saying this. Oh my Lord Krishna, son of Vasudeva, O all-pervading personality of Godhead, I offer my obeisances unto you. I meditate upon Lord Sri Krishna because he is the absolute truth and the primal cause of all causes of creation. He is the absolute truth and the primal cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universe. वही पालनहारी हैं, वही कर्ता भी हैं और वही annihilate भी करते हैं. ये उनकी एनर्जी हैं. ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनसे ही उत्पत्ति हुई है उनकी. He is directly and indirectly conscious of all manifestation, and he is independent because there is no other cause beyond him. As we hear from Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigra Anadiradir Govinda Sarvakaranakaranam. The same Brahmaji is singing the song in which he is explaining that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And here, Vyasadeva is consolidating that he is the original Purusha. Everything comes from him. And it is he only who first original living being. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representation of water seen in fire, or land seen on water. Only because of him do the material universes, temporarily manifested by the reaction of three modes of nature, Satogun, Rajogun and Tamogun, and appear factual although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is the eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from illusory representation of material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. Vyasadeva is not different from Krishna. He is also literary incarnation of the Supreme Personality of Godhead. And he is presenting this first sloka of the Srimad Bhagavatam, where he is telling who is the Supreme Personality of Godhead. So, in this verse, Srila Prabhupada is telling very clearly, personality of God and others are his direct or indirect planetary portions or portions of the portion. Srila Jiva Goswami has even be more explicitly explained the subject matter in Krishna Sandarbha. How Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Goswami, who is Jiva Goswami? Out of 6 Goswamis, who is trying to enlighten the people like us. And that's how we are worshipping the Supreme Personality of Godhead. We are not interested in worshipping the demigod worship. And it is said that also in the Bhagavad Gita, in many places, it is said that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, as confirmed by Arjuna, as confirmed by the Pandavas, as confirmed by Lord Shiva, as confirmed by, Brahmaji, and so many sages. They confirm us that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So, now, an aspiring devotees, we must understand how to become progressive in the spiritual life. It is not that you are coming here, sitting here, chanting one round, meeting one person. No, you have to be progressive in your spiritual life. What does it mean, progressive? जप तो किया है, आपने किसी के प्रेरणा से जप तो प्राप्त किया है,
उसका कुछ पोटेंसी है, उसका एब्सोल्यूट पोटेंसी नहीं है। सन्यासी जैसा, गुरु जैसा या परम वैष्णव जैसा, अगर आप तनिक पर भी उनके जीवन के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आपका पतन हो जाएगा, अगर वो कहीं रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गया। कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष का साथ अटैचमेंट हो जाते हैं और बाद में फिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ छोड़ देता है या माया में फिर गिर जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रह पाता। इसलिए वी हैव टू बिकम प्रोग्रेसिव। Prabhupada ji is saying that we have to become progressive. We have to take the shelter of the senior Vaishnavas. In your chanting propensity, you have to chant the Shuddha Nam. You have to chant very nicely. And then you should be inquiring about the furtherance of your spiritual life from the authorities. How do I progress on my spiritual life? Not that you don't see any temple president any time. Not that you never inquire what should be the purpose of my life in coming in association of the Radha Madan Mohanji temple. You must come. You must read all the Vedic literature of Srila Prabhupada. You must read all the Vedic literature which is coming from the Srila Prabhupada. Whether it is nectar of instruction, nectar of devotion, Bhagavad Gita, Bhagavatam. Develop the qualities of a Brahmana. Develop the qualities of a Vaishnava. Just don't be satisfied you're chanting the holy name and you can be at your house. And that's all right. But you must know how to also chant Gayatri Mantra. All those devotees who are progressive must aspire to become Brahmanas, must aspire to take the shelter of a transcendentalist, must know how to chant the Gayatri Mantra. By chanting continuously this Gayatri Mantra, you will be able to transcend the modes of the material nature and you will be able to go back home, back to garden. And that is what it is said here. Therefore, to purposely invoke a Gayatri Mantra, Dhimahi, this Gayatri Mantra is meant for spiritual advanced people. That's why in the material world also some people give Gayatri Mantra. Om Bhurva Sata Satur Viranam Bhargo Devase Dhimahi Dayo Yona Prachodaya. This is the first sense of a Gayatri Mantra, but rest all other Gayatri Mantra is not chanted because they remain Jaisa ka Taisa. They cannot control their senses. They cannot worship the Guru, the real Vaishnava. And they also claim to be Brahmanas. अरे हम तो गायत्री मंत्र जपता है, but मुंह से खैनी नहीं जा रही है, मुंह से सिगरेट नहीं जा रहा है, मुंह से तंबाकू नहीं जा रहा है, हम ब्राह्मण हैं। क्या रीजन है? कहीं ना कहीं जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं, इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो रही है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, साक्षात भगवान है। कलयुग में हमको उद्धार करने के लिए आए हैं और उन्होंने हमको सभी कुछ प्रणाली दिया, और इस प्रणाली में वैष्णव प्रणाली को जब तक अपने जीवन में शुद्धता तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे गृहस्थ जीवन में विरक्ति पैदा कहीं नहीं हो सकती। आप कुटुंब के साथ आसक्त होंगे, आप पत्नी के साथ आसक्त होंगे, आपके भौतिक कार्यों में आप लिप्त होके अपने मन को मनोरंजन कर रहे होंगे। कभी कभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए भी आप आसक्त बद क्यों हैं? क्या रीजन क्या है? ये शुद्ध नाम का अभी प्रवाह नहीं हुआ है। अभी नामाभास के स्तर में ही आपकी खोपड़ी में पूरा ईगो भर जाता है।
You become so arrogant, you become so deceit, you try to cheat. That's not purposeful life of chanting the holy name of the Lord. Prabhupada ji is saying, Tranadapi sune chena tarorapi sahizuna amanina manidena kirtaniya sadari. In this mood, you can pregnate the transcendental seeds to the others also. But if you become deceit and arrogant, you cannot increase anything. That's why here it is said, when one is successful in chanting the holy name, he embraces Gayatri mantra, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must therefore acquire Brahmanical qualities and be perfectly situated in the quality of goodness in order to chant the Gayatri mantra successfully and then attain to the stage of transcendentally realizing the Lord, His name, His fame, His qualities, and so on. Naam Roop Gun Tabhi Jaake Aapko Anand Aayega. भगवान के ये नाम रूप गुण और लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में है. 1 से 9 तक अगर फॉल्टर हो गए, ईगो आ गया कि तुमको आ गया सब कुछ, तो कृष्ण का केस समझ नहीं आएगा फिर. इसीलिए आध्यात्मिक जीवन को बड़े ही सतर्कता से अपने जीवन को पालन करना होगा. तो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं यहां पर इस पहले श्लोक में, द चीफ इंजीनियर ऑफ a complicated construction company never goes, but yet he knows where is happening everything. Because under him everything is happening, but yet he is not personally involved in everywhere. I don't want to claim to be the visionary for the project, because ultimately Krishna and Prabhupada is the inspirer. But when you have really visioned this project, everybody doesn't know what's happening around. But we know what has to be done where, what has to be done here, what quality we have to do here, what quality we have to have a DT department, what quality we have to have a brahmachari ashram, what quality we have to have a guest house. Everybody is not in tune with the vision. The same thing is Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is the creator of this all universes. One small Brahma cannot be the knower of everything. Prabhupada is very giving simple example here that a chief engineer of a project does not need to be everywhere. There are so many agencies in the construction of electrician, fitter, mason. So many things are there. But because this is our temple, so we have to poke our nose every now and then. Because imperfection is everywhere, but Brahma is not like us. Okay, he is being so much in tune with creation of the Supreme Personality of Godhead. That's how he becomes the secondary creator. Who can be the secondary creator? Who has completely surrendered, who has completely meditated upon the Supreme Personality of Godhead. That is what is mentioned here in the first shloka itself, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Brahma receives his mind. See, what is he saying? Prabhupada is saying, Brahmaji is receiving his mind, intelligence, materials, everything else from Krishna. And that's how he's a right kind of a person who is creating something, what the spectrum is coming from Krishna. And he is doing it, and because of, we must understand that Brahma is not the original person. So Prabhupada is giving us a wonderful example here, that once upon a time, Dwarka, Krishna was there. He called, Brahma of the particular universe. And he was amazed to see that Krishna asked him, which Brahma has come? Huh? So this Brahma was completely amazed why Krishna is asking this. Are there many Brahmas also than me? He thought that मैं तो सर्वे सर्वा हूं.
कभी कभी हम लोग छोटे छोटे, मैंने बताया ना, कभी हम लोग एग्जाम्पल देता हूं, चूहे को मिल गई थोड़ी सी हल्दी, वो बन बैठा पसारी, he becomes a storekeeper or a store. So this same thing happened with Brahma ji. अरे और कोई है क्या, मेरे अलावा भी और कोई है? Then he calls all the Brahmas and he sees there are 4-headed, 10-headed, 100-headed Brahmas, 1,000-headed Brahmas. And he finds himself so insignificant in front of all these Brahmas. And that's how Krishna smashes the ego of an Chaturmukhi Brahma, that there are some more Brahmas also there. The true disciple and a true guru is one who completely smashes our egos and makes us very humble all the time. That is a transcendentalist. Because we get puffed up with small things in our lives. Even if you bring a small ball pen from a shop, you will show 10 times, I have brought this ball pen. And what to speak if somebody brings a new car? No, he has to request our Brahman ji, please come, मैंने तो आज गाड़ी खरीदा, आइए पूजा कीजिए. It's show-off business, isn't it? But good, at least some people who come for doing the puja of the car, isn't it? So under any circumstances, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna is not allowing us to get puffed up. We should be always very, very humble, and so that we can understand what is our position. If it can happen to Brahma, who are we? We're nobodies. We are servants of our senses. We are servants of our anger. We are servants of our so many people. Even sometimes the father is a servant of a son, isn't it? Isn't it? If the son gets sick, the father has to. बचपन से क्या करते रहते? कभी आजकल के मॉडर्न जमाने में तो सभी है. आजकल पत्नी बोलती है तुम्हारा भी काम है यही, क्या करना है, उसका पोटी साफ करो, ये आपका भी बच्चा है. So under these situations, we have to really understand, how progress on the path of spiritual life. We have to be very, very humble. We have to chant our rounds very nicely, as you must have already observed the Ekadashi. These all Ekadashis are making us very, very humble. We see that even, Bhima was not interested in observing the Ekadashi. But Vyasadeva is insisting that you must observe the Ekadashi. Though you have a particular type of a fire in your stomach, which is making you always eat more and more, but you must observe Ekadashi. When Krishna is instructing his intimate devotees, so does he is instructing us also that we should become progressive in the path of spiritual life and happily do these austerities in order to get Krishna praying. So this is like in connection with this, we have today a wonderful, a day that is Panihati Chida festival. You see? And this is Nibandit in Chaitanya, Charitamrit here. So we must hear. Raghunath Das was a very rich man. And he was a grihastha. He was always spending money for the benefit of the devotees. कभी फीस्ट कर देते थे, कभी कुछ करते थे, मगर फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनसे संतुष्ट नहीं थे. वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, वो यहां पर रहते थे, रघुनाथ दास जी इधर रहते थे. तो कैसे रघुनाथ दास जो है इस स्टेज पे पहुंच गए
कि वो चैतन्य महाप्रभु जी को जगन्नाथपुरी में मिलने गए, मगर थ्रू वाया ऑल दिस. सो वी हियर दिस वंडरफुल पास्ट टाइम्स. चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आहत्य की कृपा रूपी रस्सी से रघुनाथ दास गोस्वामी को ग्रनित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया. दिस इज ऑल फॉर ऑल गृहस्थस. वी मस्ट लर्न how Lord Chaitanya Mahaprabhu is very compassionate, how he wants to elevate our consciousness very, very nicely. Man, he is doing for Raghunath Bhatta, Raghunath Goswami, Raghunath Das Goswami, he can also do for us if you want to become progressive on the path of spiritual life. You see? उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखकर अपने निजी संगी बनाया. मैं उन्हें नमस्कार करता हूं. When he goes back to Jagannath Puri, Lord Chaitanya Mahaprabhu hands over to him to Damodar Goswami. He said that you take care of him. But before this whole thing, how the chronological order is nibandit, is completely composed in the Chaitanya Charitamrita, that makes us more powerful. That makes it more powerful us to listen these things so that we also become progressive on the path of spiritual life. Grahastha life is not a license for sense gratification. Grahastha life is also not an impediment on the progress of spiritual life if you want to really progress on the path of spiritual life. But you have to be virakta. You have to become vairagi. And if you're not becoming vairagi, even a grahastha life, that means there is some problem in your progressive life, spiritual life. If you're not able to give up attachment to kutumba, if you're not able to give, become renounced from your positions, material positions, you cannot progress on the path of spiritual life. So it is said, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो. जब महाप्रभु को कृष्ण के विछोह की तीव्र पीड़ा का अनुभव होता, वो एकमात्र रामानंद राय और दामोदर के गाए हुए गायन सुनते थे. Okay? Lord Chaitanya Mahaprabhu used to also feel separation from Lord Krishna. And when he was feeling this separation, he used to hear Krishna Katha, and he was also singing the songs, and he used to hear from them. दिन के समय विविध भक्तों की संगति होने से महाप्रभु का मन कुछ तो दूसरी ओर लग जाता था, मगर किंतु रात्रि के टाइम पे उनको ये सेपरेशन बहुत ही कष्ट देता था. दो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही निकट थे. एक तो रामानंद राय तथा दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के साथ रहते थे. और पूर्व काल में जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, कृष्णदास कविराज जी कहते थे, उनके भी 5000 वर्ष पहले कृष्ण के बड़े अच्छे सखा थे. कौन सखा थे बताइए? सुबल बाबा. Isn't it? चैतन्य कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण के अच्छे अच्छे सखा थे. भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, तब उनका एक बाल मित्र सुबल उन्हें तब सुख देता जब वे राधा रानी का विरह प्राप्त करते थे, तो सुबल उनको शांत कर देता था. इसी तुलना कर दिया जब चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का वियोग सताता था, तो वो दामोदर और रामानंद राय के मुखार वृंद से गीतावली सुना करते थे. पूर्व काल में श्रीमती राधा रानी कृष्ण वियोग की पीड़ा का अनुभव करती, तब उन्हें नित्य सखी ललिता अनेक प्रकार से सहायता करके उनकी जीवित रखती. उसी तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव आते, तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके जीवन बनाए रखने की उनकी सहायता करते. रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी का
सौभाग्य का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है कि हाउ दे बिकेम द इंटीमेट सर्वेंट्स of Lord Chaitanya Mahaprabhu. It is beyond the purview of Krishnadas Kaviraj to compose those pastimes in Chaitanya Charitamrita. So, इस तरह का महाप्रभु अपने भक्तों का जीवन का आनंद लेते हैं। वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के भक्त। अब सुनो रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह महाप्रभु से मिले। How Raghunath Das, who was a grihasthi, who was from a rich family, who was completely very, very rich, he had no dearth of anything in his life, but yet he was aspiring to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he was trying to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu, but he was afraid of meeting Lord Chaitanya Mahaprabhu directly. Mahajanena gata supantha tad vidhi pranipateena par prashnena seveya upadikshantate jnanam jnanena tattva darshanam. Before you have aspiration to meet Lord Krishna, you must meet the devotees of the Lord. Without their mercy, you cannot become progressive on the path of spiritual life. As we see from the life of Raghunath Das, that how he is trying to serve. While he was a grihastha, but he was very much virakta from inside. He was very virakta from inside. तो जब रघुनाथ जी को पता चला कि मथुरापुरी से लौट आए तो रघुनाथ दास ने महाप्रभु के चरणों तक जाने का प्रयास किया। जब रघुनाथ दास के ताऊ हिरण्य दास ने कर वसूल के लिए सरकार से समझौता किया तो मुसलमान चौधरी या कर सहायक अपना पद खोने के कारण उसे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगा। हिरण्यदास 20 लाख रुपया एकत्रित करते थे। एवरी टाइम ही यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्स। अतएव उन्हें सरकार को 15 लाख रुपया देने चाहिए थे, किंतु वे केवल 12 लाख रुपया देते थे। इस तरह 3 लाख रुपया अधिक लाभ उठाते थे। ये देखकर मुसलमान चौधरी तो जो कि तुर्क था उनका प्रतिद्वंदी बन गया। सरकारी खजाने को गुप्त हिसाब भेजकर चौधरी कार्यकारी मंत्री को ले आया। हिरण्यदास को पकड़ने के उद्देश्य से चौधरी आया, किंतु वो घर छोड़ चुके थे। अतएव चौधरी ने रघुनाथ दास को बंदी कर दिया। ओके, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिरण्यदास बंदी, he made who bandi? Raghunath Das bandi. And then how Raghunath Das with his yukti is transforming the heart of a Chaudhary, saying that, oh, you are my uncle and you are all connected with my family and everything. So वो उनको कहते थे कि आप मेरे अपने पिता तथा उनके बड़े भाई ताऊ को ले आओ, अन्यथा तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो रघुनाथ जी को वो बता रहे थे कि दैट यू ब्रिंग योर अंकल, otherwise I will give you danda. And with the result, he put Raghunath Das into the jail. And but चौधरी उन्हें पीटना चाहता था, but पीट नहीं पाते। जब भी वो पीटने जाते थे तो उनसे पता नहीं क्या अकस्मात उनके दर्शन करने से प्रभावित हो जाते थे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इनको पीटूंगा नहीं। तो ऐसे भाव देखने के बाद रघुनाथ दास जी ने युक्ति सुना और क्या बताया? निसंदेह वो चौधरी रघुनाथ दास से भयभीत था, क्योंकि रघुनाथ दास कायस जाति के थे। यद्यपि चौधरी उसे मुख से डांटता डपकता था, किंतु उन्हें पीटने से डर रहा था। इस तरीके से जब ये हो रहा था तो रघुनाथ दास ने उसका समाधान निकालने के लिए एक युक्ति सोची। अतः उन्होंने मुसलमान चौधरी के चरणों पर ये अन्याय किया। उन्होंने मुसलमान चौधरी के चरणों पर ये अनुनय किया। क्या किया? हे महोदय, मेरे पिता तथा आपके बड़े भाई दोनों ही आपके भाई हुए। सारे भाई किसी न किसी बात के लिए सदैव झगड़ते रहते हैं। कभी भाई भाई परस्पर लड़ते हैं तो कभी मैत्री पूर्वक व्यवहार करते हैं। इसका कोई निश्चय नहीं है कि कैसे बदलाव कब आए। It's between the relationship between the two brothers. Sometimes they fight and sometimes they are friends.
बट वाई शुड यू ट्राई टू मेक मी बंदी? इस तरह मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज आप लड़ रहे हैं, किंतु कल आप एक साथ हो जाएंगे. हु इज टेलिंग? रघुनाथ दास इज टेलिंग टू whom? चौधरी. बिकॉज आज आप तो दोनों भाई हैं, आप आज लड़ रहे हैं, कल साथ में होंगे. जिस तरह मैं अपने पिता का पुत्र हूं, उसी तरह आप भी हो. मैं आपकी आश्रित हूं और आप मेरे पालन करता है. मैं अपने बाप का बेटा हूं, इसी तरीके से मैं भी आपका पालन, आप मेरे पालन करता है, तो मेरे बड़े ही हो गए. तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है. पालनकर्ता को शोभा नहीं देता कि दूसरे द्वारा पाले जाने वाले व्यक्ति को दंड दे. आप सभी शास्त्रों में निपुण हैं, निसंदेह आप एक जीवंत संत के समान हैं. रघुनाथ दास की याचना पूर्वक वाणी सुनकर मुसलमान का हृदय पिघल गया. वो रोने लगा और उसके आंसू से उसकी दाढ़ी से दाढ़ी से लुढ़क पड़े आंसू. वो रोने लगा इमोशनली. मुसलमान चौधरी ने रघुनाथ दास से कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो. मैं आज तुम्हें किसी न किसी तरह छुड़ा कर रहूंगा. जिन्होंने बंदी बनाया वही अब क्या कर रहे हैं? उनके छुड़ाने का यत्न ढूंढ रहे हैं. मंत्री को सूचित करते चौधरी ने रघुनाथ दास को छोड़ दिया और तब उन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक कहने लगा. उसने कहा, तुम्हारे पिता का बड़ा भाई तुम्हारा ताऊ कम बुद्धि वाला है. वो 8 लाख रुपयों का भोग करता है, किंतु क्योंकि मैं उसका भागीदार हूं, अतः उसे उसका कुछ हिस्सा मुझे भी देना चाहिए. वो तब भी प्रलोभन में थे. So why he put him behind the bars? Because वो कहीं ना कहीं पैसा कम मिल रहा था और इस पैसा से जर जमीन जोरो. उस वक्त भी प्रॉब्लम था, आज भी प्रॉब्लम है. तो ये मुसलमान जो है बता रहा था, बड़े अब तुम जाकर मेरे तथा मेरे ताऊ के बीच भेंट कराओ. वो जो भला समझता हो वही करे. मैं पूरी तरह उनके निर्णय का आश्रित रहूंगा. रघुनाथ दास ने अपने ताऊ तथा चौधरी की भेंट का प्रबंध किया. उन्होंने कलह का समाधान कर दिया. सब शांत हो गए. दिस वॉज द ड्यूटी ऑफ रघुनाथ दास टू डू दैट. और इस तरीके से रघुनाथ दास ने पूरा 1 वर्ष अच्छे व्यापारी प्रबंधक के रूप में बिताया, किंतु अगले वर्ष उन्होंने पुनः घर छोड़ने का निश्चय किया. हमेशा वो घर छोड़ने के लिए सोच रहे थे, मगर उनको पकड़ पकड़ के फिर बंद रखा करते. ओके. एक रात वे अकेले उठे और चल पड़े, किंतु उनके पिता ने दूर स्थान पर उनको पकड़ लिया और वे उन्हें लौटा ले गए. His father was always keeping an eye on him. आजकल के जब भी कभी कोई ब्रह्मचारी यहां पर बन जाता है तो पिताजी सब आ जाते हैं. क्या हो गया मेरे बेटे को, है ना. ये प्रथा तब भी चल रही है, आज भी चल रहा है. बहुत स्टोरियाज आ जाती है. बच्चा भक्त बन जाता है तो बाप बोलता है, ये क्या कर दिया भाई. रघुनाथ दास जी भी जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था और वो जाना चाहते हो. ये प्राय प्रतिदिन का व्यापार बन गया. रघुनाथ घर से भाग जाते और उनके पिता फिर उन्हें वापस लौटाते भी. और तब रघुनाथ दास की माता ने उनके पिता यानी कि अपने पति से कहा. माता ने कहा, हमारा पुत्र पागल हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर रखो. उनके पिता अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास स्वर्ग के राजा जैसा संपत्ति है, ऐश्वर्य है, उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदरी है, फिर भी ये सब उनके मन को बांध नहीं सका है. पिताजी अच्छी तरीके से जान सकते हैं. तो फिर हम इस बालक को रस्सियों से बांधकर घर में क्या करेंगे? जिसका विरक्ति अंदर से आता है ना, वो कितना ही बाहर से जपमाला लटकाए, पूरा विरक्ति नहीं आता. रियल असली वैराग्य होना चाहिए. जैसे रघुनाथ जी का देख रहे हैं कि माता पिता सब समझ गए कि असली वैराग्य क्या है. तो पिता ही बोलता, भाई रस्सी से बांधने से कुछ होने वाला नहीं है, और वास्तवता में अंदर से विरक्ति है.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूर्ण कृपा की। चैतन्य चंद्र के पागल को घर पर कौन रख सकता है। तब रघुनाथ दास ने अपने मन में कुछ विचार किया और अगले दिन वे नित्यानंद गोसाई के पास गए। He tried his best. कभी कभी हम लोग भी बहुत ट्राई करते हैं ना, घर छोड़ेंगे, वो करेंगे, ये करें, मगर होता नहीं है ना, पकड़ पकड़ के वापस लेके जाते हैं। मगर यहां पर भी इन्होंने बहुत ट्राई किया। अब वो किसके पास जा रहे हैं? नित्यानंद प्रभु को ढूंढ रहे, किधर है। आज दही चीड़ा फेस्टिवल का आनंद देखिए कैसे आता है, कि कैसे रघुनाथ दास जाते हैं मिलने के लिए, किसको? नित्यानंद प्रभु को। और नित्यानंद प्रभु उनसे कृपा कर देते हैं, बोलते हैं आज यहां पर सब लोगों को आप दही चीड़ा खिलाओ। ओके, वो कहां जाते हैं? विच प्लेस? पानीहटी। तो जाते हैं पानीहटी में, तो वहां पर इमीडिएटली क्या बोलते हैं, पानीहटी गांव में रघुनाथ दास की बेटी नित्यानंद प्रभु से हुई, जिनके साथ अनेक कीर्तन करने वाले सेवक तथा अन्य लोग थे। गंगा नदी के तट पर वो वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु करोड़ों उदय होते सूर्य के समान तेज युक्त प्रतीत हो रहे थे। कौन गया है पानीहटी? जय। आपने वो शिला देखी जहां पर नित्यानंद प्रभु बैठा करते थे? हाँ? अरे मंदिर तो बना दिया, मगर वो वातावरण तो वही है, राज्य तो वही है। और नित्यानंद प्रभु जिस शिला पे बैठे थे वो भी उधर ही है। मेरे को साथ में लेके जाओ, दिखाऊंगा। आप अकेले अकेले जाते हो ना। द प्रॉब्लम इज दिस, एंड आई कैन नॉट ऑल्सो गो टिल वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट। व्हाट टू डू नाउ? तो वहां पर चले गए, क्योंकि ये गंगा जी के तट पे, अभी थोड़ा गंगा जी वहां पर सूखी हुई है, पहले गंगा जी वहां पर ही बहती थी। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे। तो उन्हें घेर कर भूमि पर अनेक भक्त बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु के प्रवाह को देखकर रघुनाथ दास का आश्चर्यचकित हो गए। रघुनाथ दास ने दूर स्थान पर दंड की तरह नमस्कार किया। ये पहला कर्तव्य है प्रोग्रेस डिवोटी होने का। कभी कभी हमारे पास नए लोग आ जाते हैं, कैसे हैं प्रभु जी? हैं? क्या करेंगे? क्या संस्कार पड़ेगा? अब मैं क्या बोलूं? हाँ ठीक हूं प्रभु। Whenever you see a senior Vaishnava, when you see a sannyasi, when you see a more senior than you fall like a log. If you want to have a mercy of such Vaishnavas. But, we don't have those culture nowadays. This whole culture is eradicating. पहले हम लोग जितनी बार सन्यासी को देखते थे उतनी बार प्रणाम करते थे। चाहे 4 बार मिले, 5 बार मिले, 6 बार मिले, जितनी बार सन्यासी का दर्शन करें या सीनियर डिवोटी का दर्शन करें, हम उनको प्रणाम करते थे। जब तक वो नहीं बोले कि नहीं नहीं बस हो गया सूरदास, अभी हो गया, तब हम छोड़ देते थे। मगर हमने पहले से ही छोड़ दिया, यहां पर कुछ करना ही नहीं है। क्या करें? तो यहां पर देख रहे हैं कि रघुनाथ दास दूर से ही, अभी तक पहुंचे नहीं वहां पर, उन्होंने दूर से देखा नित्यानंद प्रभु एक टीले पे बैठे हुए हैं और वहां पर और वो सब भक्तों के संग में थे। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा विनोदी थे। दयालु होने के कारण से वे रघुनाथ दास इस प्रकार बोले। क्या बोले? तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो। अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, इसलिए तुम्हें दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु का दंड क्या था? दही चीड़ा फेस्टिवल। कभी कभी वैष्णव मिल जाने से क्या, कहीं मैं सूरदास प्रभु के पास जाऊंगा तो वो बोलेगा जरा चला फीस्ट आज स्पॉन्सर करो, इसलिए मिलना ही नहीं है। कहीं बोलेगा कि 2-4 ईंटें यहां पर खरीद के मंदिर के दे दो, जाना ही नहीं है उधर।
This is the materialistic propensity, isn't it? क्यों जाए मंदिर में, वहां पर साधु पीछे पड़ेंगे, मंदिर बन रहा है, वो पैसा मांगेंगे, मंदिर ही मत जाओ, या मेरे ऑफिस में ही मत आ जाओ, क्योंकि मैं बोलूंगा भाई क्या किया तुमने। हाँ, जब मुसलमानों का मुल्ला हर फ्राइडे ज़कात मांग सकता है, क्या हम सब मिलके मैं आपका मंदिर के लिए पैसा नहीं मांग सकता हूं? इस डर की वजह से हिंदू लोग मंदिरों में नहीं जाते। प्रॉब्लम ये है। मगर मुसलमान जाएगा, नमाज पढ़ेगा फ्राइडे का और छुट्टी रखेगा, या हिंदू से पूछो तुम छुट्टी कभी रखता है क्या? वो 365 डेज पैसा 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 पैसा, भक्ति कहां से आएगा? मुसलमान ज़कात करते हुए टेररिस्ट भी बन सकता है, गोली भी खा सकता है, मगर हिंदू जो है मंदिर अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये दुर्भाग्य है। मैं जब मीरा रोड में था, या यहां पर भी देखिए, फ्राइडे को जितने भी हमारे मुसलमान भाई यहां पर काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, वो फ्राइडे को काम नहीं करते, वो बंद रखते हैं फ्राइडे, वो जाते अपने नमाज करने के लिए। भले ही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट सीखते हैं वहां पर, भले ही वहां पर जिहाद भी सीख लेते हैं। बच्चा बच्चा वहां पर ये सीख रहा है कि क्या है, क्या करना है हमको, जिहाद। जिहाद का मतलब क्या है? काफिर को मारो, ये उसको शिक्षा मिल रहा है। और यहां पर हम लोग ट्रांसडेंटल शिक्षा प्रदान करते हैं, उसमें रुचि नहीं है लोगों को, हिंदू को। क्या करेंगे? पकड़ पकड़ कर थोड़ी ला सकते हैं भाई, बताइए। वहां पर जिहाद करने के लिए और काफिर को मारने के लिए, वो हर मस्जिद में यही संदेशा मिल रहा है। यही संदेशा अनादिकाल से आ रहा है, चाहे वो ईरान में हो, इराक में हो, अफगानिस्तान में हो, कश्मीर में हो, बांग्लादेश में हो, ये चलता आ रहा है। मगर फिर भी हिंदू जागता नहीं, उसको सिर्फ अपने पैसे की चकड़ी हुए, बस मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, दैट्स इट। भले ही तुम मेरे को दल्ला बोलो, मगर मेरा सर बचना चाहिए। This is the propensity of an Hindu, that he wants to only be engrossed in the sense gratification processes. He will be only always suffering in the material world, but he will not get this transcendental knowledge. So from the great acharyas we are seeing how to approach a Vaishnava. If we don't have these propensities in our life, the progressive nature of spiritual life will be stopped. That's why here you see, जो ही लोगों ने सुना कि उत्सव होने जा रहा है, त्यों ही सभी प्रकार के ब्राह्मण तथा अन्य सज्जन पधारने लगे। इस तरीके से असंख्य लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने किसको बोला? रघुनाथ दास को। क्या बोला? क्या हम लोग यहां पर पनीहटी चीड़ा फेस्टिवल कराएंगे, तुम केला लाओ, मैंगो लाओ, दूध लाओ, दही लाओ। एक साइड में दही वाला चीड़ा फेस्टिवल होगा, एक साइड में दूध का होगा। तो उन्होंने सब लोगों को, तो जब सब खबर हो गई तो सब लोग टूट पड़े और वो आने लगे। जैसे हम लोग यहाँ पर कभी फेस्टिवल होता है तो फिर सेंट्रल पार्क से भी लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए। समझे कि नहीं? तो भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांवों से खाद्य पदार्थ लाए, बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन. He felt very happy that Nityananda Prabhu told me to have this festival. A grihastha should always feel very happy if a sadhu tells him to do some service in the service of Krishna, not for his own sense gratification. You should feel very privileged. We are very thankful to our congregational devotees, wonderful devotees who are always serving Radha Madan Mohan Ji, sacrificing time, sacrificing their money, sacrificing their
comforts of the Grihastha life, and they are doing lots of preaching work. This should be the attitude of every Grihastha in his life. So here we see Raghunath becoming very happy. Lord Nityananda Prabhu, engaged him for this. इस तरीके से सभी भक्त लोग, रामदास, सुंदरनाथ, गदाधर दास, मुरारी, कमल, सदाशिव, पुरंदर, सभी हो गए, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर, all these wonderful devotees, they became participants of this, and they brought two pots of earthen pot. One was with dahi chida, and another was with milk and chida. So everybody was carrying these two pots, and ultimately हर एक को दो मिट्टी के पात्र मिल गए, और दोनों पात्रों में आपको भी आज मिलेगा, don't worry, huh? So at 11 o'clock you will get it. So you will also get. And कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पे स्थान मिला तो वो लोग चबूतरे बैठ के खाने लगे, कोई जगह नहीं मिला तो गंगा जी के तट पे बैठ के खाने लगे. इस तरीके से अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे में भी स्थान नहीं मिल सका, वे जल में प्रवेश करके खाने लगे. पानी में घुस के ही खाने लगे वहां पर, समझे आप. इस तरीके से बहुत से लोग चबूतरे के नीचे और कुछ गंगा के किनारे बैठ के उनको सबको भोजन बांटने लगे. 20 व्यक्तियों द्वारा 2 पात्र दिए गए. इस तरीके से राघव पंडित वहां आ गए. वहां स्थिति को देखकर अत्यंत आश्चर्य से हंसने लगे. वे अपने साथ घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, जिन्हें उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेंट किया. जिस वक्त उन्होंने भेंट किया, उसी वक्त नित्यानंद प्रभु ने मन ही मन में कल्पना किया चैतन्य महाप्रभु के बारे में. ये नहीं हमारी तरह रसगुल्ला मिल गया तो पता चला भाग गए, कोई देखेगा नहीं, मेरे को स्पेशल रसगुल्ला. यहां पर नित्यानंद प्रभु को किसने लाया? उनको स्पेशल व्यंजन लाए राघव पंडित ने. तो उन्होंने मन ही मन में किसका स्मरण किया? स्वयं साक्षात चैतन्य महाप्रभु का. तो इस तरीके से कभी भी वैष्णव को अकेला खाना नहीं चाहिए, बांट के खाना चाहिए. ये नहीं कि अच्छा मैं खाऊं, बुरा उसको खिलाऊं. अच्छा दूसरों को खिलाओ. ये रघुनाथ दास जी से सीखेंगे हम कि आहिस्ता रघुनाथ दास जी इतने रिच फैमिली में थे. जब वो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, बड़े प्रसन्न हो गए जगन्नाथपुरी में. वो सबके साथ नहीं गए, वो अलग रास्ता बना दिए और वहां पर चले गए और वहां पर चैतन्य महाप्रभु से मिले. और जब वहां पर चैतन्य महाप्रभु से मिले तो दूर से उन्होंने प्रणाम किया और वो समझ गए कि ये रघुनाथ दास है. और वो कहां पर खाते थे? बहुत दिन तो उन्होंने आनंद बाजार में खाया, मगर उसके बाद में जगन्नाथ मंदिर में से जो नाली में से चावल गिरता था, रघुनाथ जी उस चावल को निकाल के खाया करते थे. और ये सब बातें चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया तो वो भी एक दिन उनके पास गए. बोले, रघुनाथ, मैंने सुना कि तुम कुछ विशेष कुछ खा रहे हो. हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु भी उनके पास गए और वो खाने लगे उनके हाथ से. और तभी जाके वहां पर चैतन्य महाप्रभु से भेंट होती है और वो उनको सौंप देते हैं दामोदर को. बोला, तुम इनका देखभाल करो. So this is the mood that how we can become progressive in our spiritual life. If we are not progressive in our spiritual life, we will be anchored to this material world. So from this Dahichida festival, we have to one thing is Grihastha has to serve the sadhus. Whatever Lakshmi he has, he must try to engage it in the service of Krishna all the time. Then he has to become more and more virakta. As Raghunath Das left his house
All he's left, his riches and everything. He went to Jagannath Puri to associate with Lord Chaitanya Mahaprabhu. In there also he was not taking prasadam with him. He was taking prasadam in Anand Bazar. And from there also when he was saturated, then he started eating prasadam from the drain which was coming. And he started eating. So, इस तरीके से यहां पर देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, मैं ग्वालों का जाति का हूं, इसलिए सामान्यतः मेरे साथ अनेक ग्वाल संगी रहते हैं। जब हम नदी के रेतीले तट पर इस तरह के वन्य भोजन में एक साथ खाते तो प्रसन्न होते थे। सो ही इज एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ द डिवोटीज। जब हर एक को चिवड़ा परोसा जा चुका तो नित्यानंद प्रभु ध्यान से चैतन्य महाप्रभु को ले आए। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए। तब उन्होंने देखा कि किस तरह अन्य लोग दही तथा घनीभूत दूध के साथ चिवड़ा का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हंसते भोजन का एक कोर लिया तो उसे नित्यानंद प्रभु के मुख में डाल दिया और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को दिया। इस तरीके से प्रेम बढ़ता है। सी वी इंक्रीज अवर लव। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तब वे क्या कर रहे थे ये कोई नहीं समझ सका, किंतु कुछ लोग तो बड़े भाग्यशाली थे, ये देख सके कि चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर उपस्थित थे। एंड ये जो प्रक्रिया नित्यानंद प्रभु कर रहे थे सभी लोग नहीं देख पा रहे, कुछ ही जो इंटीमेट डिवोटीज थे वो देख पाए कि नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के मुंह में एक कोरा दे रहे हैं, एक मोर्सल। ही इज फीडिंग लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया, उन्हें बैठाया। इन दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, सभी लोग हरि नाम का कीर्तन करने लगे। आफ्टर दे फेड द प्रसादम, देन शाम को संध्या आरती में कीर्तन करो, ये नहीं कि घर भागो। आज आपको 11 बजे प्रसाद मिलेगा तो आप भागने मत जाना घर में, तो यहां पर कीर्तन करो। ये जो खाया उसको ठाकुर जी के प्रेम के लिए निछावर करो। ट्राई टू चैंट एंड डांस हियर वेरी नाइसली। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव तथा कृपा को कौन समझ सकता, वे इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु गंगा तट पर चिवड़ा खाने आने के लिए प्रेरित किया। जब अनेक अनेक गांव के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना तो वे चिवड़ा, दही, संदेश, मिठाई तथा केला बेचने के लिए वहां आ गए। सो एवरीबडी केम टू सेल। जैसे वो सभी प्रकार के बोझ सामग्री लेकर आए, रघुनाथ दास ने सारी की सारी जो सामग्री थी खरीद ली। सबको पैसा दे दिया और बोला खिलाओ खिलाओ, जितने भी लोग हैं यहां पर उनको खिलाओ। जो भी ये देखने के लिए आया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और चिवड़ा, दही, केला खिला गया। नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ तथा मुख धोए और रघुनाथ दास को चारों पात्रों में बचा हुआ भोजन दिया। सो हाउ ही गॉट नित्यानंद मर्सी, नित्यानंद प्रभु तो अपना मुंह वगैरह साफ किया, मगर फिर भी उनका जो प्लेट जो पड़ा हुआ था वो किसको दे दिया? रघुनाथ दास जी को दे दिया। नित्यानंद प्रभु ने अपना प्रसाद उनको दे दिया और इस प्रसाद की कृपा के अंतर्गत वो फिर कहां चले गए? जगन्नाथपुरी गए। उनके हृदय में और विरक्ति पैदा हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता से घर से भागने गए लगे और वो रात्रि में ही घर छोड़ दिए। सब लोग बंगाली भक्त लोग जो है सब लोग मायापुर जा रहे थे। बोला अगर मैं इन सब के साथ जाऊंगा तो क्या होगा, कोई ना कोई मेरे को पकड़ लेगा। तो उन्होंने अपना अलग रास्ता बना के कम से कम 12 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंचे। और 12 दिन में आपको मालूम रघुनाथ दास जी ने सिर्फ 3 बार भोजन लिया। आउट ऑफ 12 days रघुनाथ दास जी ओनली ate for 3 days। और चलते रहे चलते रहे चलते रहे and ultimately he reached जगन्नाथपुरी। तो इस तरीके से
चैतन्य महाप्रभु के नित्य की तरह नित्यानंद प्रभु के नित्य की तुलना इन तीनों जगतों में किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती है। और सभी लोग कीर्तन करने लगे। वहां पर सभी राघव पंडित दोनों भाइयों के समक्ष प्रसाद ले आए। उसके बाद अन्य सभी वैष्णवों को प्रसाद वितरण किया गया। इस तरीके से मिठाई, खीर, उत्तम पकवान, चावल जो अमृत के स्वाद को मात करने वाले थे, कई प्रकार की सब्जियां थी, वहां पर सबको देने लगे। और वे इतने सारे प्रसाद ले आए कि लोग उन्हें ठीक से जान नहीं पाते थे। निसंदेह ये सच था कि परम माता राधा रानी स्वयं आकर राघव पंडित के घर के भोजन पकाती थी। ओके, श्रीमती राधा रानी की दुर्वासा मुनि की बड़ी कृपा थी। क्या वो जो भी कोई पकाएगा वो अमृत से भी अधिक मधुर हो जाएगा। उनकी पाक विद्या का ये विशेष गुण था। ये भोजन सुगंधित एवं देखने में सुहावना लगता था और समस्त मधुरता का सार होता। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों भाई परम संतुष्ट के साथ भोजन करते। वहां पर उपस्थित सारे भक्तों ने रघुनाथ दास से प्रार्थना की वे बैठकर प्रसाद ग्रहण करें, किंतु राघव पंडित ने उन्हें बताया कि वे बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो होस्ट होता है हमेशा, ये नहीं कि पता चला अभी तक ब्रह्मचारी लोग खाए नहीं, वो नहीं खाए, अगर गृहस्थ आके खा के भाग भी गया यार। All the devotees should learn how to serve, not that eat first. So what is Raghav Pandit is telling to whom? Raghunath Bhatt, that we will eat later on. Let all these people eat first. This is also an special, instruction for us. Whenever we have a festival and anything here, all those devotees who are the Radha Madan Mohanji's congregational devotees, they must see that all the guests take prasadam and they should take at there. Especially the leaders. All the leaders should sit in a circle and then eat prasadam. First see that every person who comes to the temple must eat prasadam very sincerely, very nicely, and they should be very getting happy by the service of the servers, because they will get taste of Krishna consciousness. The senior devotees have to do this. They have to learn this, how to serve prasadam to all those people who have not known the glories of prasadam. You have to impregnate the seeds of bhakti through your service. If you are not doing this, you are not doing real service to Srila Prabhupada's movement. This movement has to expand with the compassion of the devotees, the care of the devotees, renunciation of the devotees. That will make the community, individual devotional service progressive, and you become wonderful devotees. This is what our acharyas are teaching, and this is what we have to learn. Then only we'll be able to enjoy these festivals in the fullest. And you will feel more and more spiritual and more blissful. So I would like to cut it here short. And of course, there is a long way to go to this. There's a lot of pastimes, but we will see that. And at the end, Raghav Pandit is, Raghunath Das goes to Mayapur, takes the association of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu is very pleased upon him. He's putting him under the direction of Damodar, his personal secretary. And with the result, he gets the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And it's all through the wonderful Nityananda Prabhu who made him to do this Panihati, festival. And so all the devotees bestowed special mercy upon, Raghunath Das, and that's how he was able to go. He was able to get rid of the shackles of the Grihastha life and go to Jagannath Puri and meet Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he got the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So आप ये समझ लीजिए कि आपने दही चिड़ा फेस्टिवल खा लिया. क्या खा लिया? पा लिया? अभी थोड़ा कीर्तन कीजिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि हरि बोल. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radhe. Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Gaurani Jai, Jai Gaurani Jai. Jai Gaurahari, Jai Gaurahari. Gaura, Gaura, Gaurahari. Gaura, 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 Gaurahari. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Thank you very much, Hare Krishna. Thank you very much. So afternoon also there will be a Sunday love feast program.